Good morning to everyone. This is the sum you can see in front of your screen, which we will be solving now. The summary balance sheet of A Limited and B Limited as on 31/12/2012 were as follows. So the rupees given is in lakhs, and in the liability side there are two companies, A Limited, B Limited. In the liability side you can see equity share capital rupees 10, which is 24 lakh and 12 lakh. So 12 lakh divided by 10, you get 1,20,000 shares. 24 lakh divided by 10, you get 2,40,000 equity shares. Share premium is given 3,60,000, which is there in A Limited. Then you have capital reserve only in B Limited. General reserve, both the companies. Profit and loss, both the companies. Creditors, current account of B Limited. Profit for the year is 1,80,000 and 60,000. In the asset side also you have assets, plant and machinery, furniture, stock, data, bank balance, trade account, trade investment in B Limited. This is the investment which has been done. So A Limited has purchased maximum shares in B Limited and becomes the holding company of B Limited. B Limited is the subsidiary. There is goodwill, current account of B Limited. Then you can see here, A Limited acquired on 1/1/2012 from the shareholders of B Limited, 96,000 shares were allotted to them at rupees 10 lakh, at rupees 10,80,000. 10,80,000. And the consideration, see, they have given total number of shares is 12 lakh divided by 10. It is 1,20,000, out of which 96,000 shares were purchased by A Limited. A Limited acquired. What is the date when acquisition took place? It is 1/1/2012. It is 1st of Jan 2012. Number of shares acquired is 96,000, were allotted to them at rupees 10,80,000. 10,80,000 is the price at which is the amount at which A Limited acquired shares in B Limited. The consideration for the share of B Limited was arrived at by valuing the plant and machinery at rupees 10,44,444. This is the revised value of plant and machinery. Old value given is 8,50,000. New value given is 10,44,444. There is a revaluation in the asset. Then there is furniture, whose new value given is 83,211. Old value was 80,000. Old value was 80,000 and the new value is 83,211. So there is revaluation of assets, that is plant and machinery and furniture, which has happened. Then they say placing no value for trade investment and goodwill. There is trade investment of 30,000 which has no value, and goodwill is there 1,50,000 that also has no value. No value means the value becomes zero. No value means the value becomes zero. Trading investment, which was 30,000 has no value now.
revised value becomes 0. Goodwill also 1,50,000 has no value now. That means the revised value becomes 0. The depreciating figures of plant and machinery and furniture on 31/12/2012 were after providing depreciation for 2012 at 10% and 5% respectively on the book values as at 1st January 2012. मीन्स व्हाट दे से कि यहाँ पे जो वैल्यू है 8,50,000 एंड 80,000 इसमें डेप्रीसिएशन माइनस किया है. दिस बोथ आर WDVs, written down values, which has been calculated after deducting 10% depreciation on plant and machinery and 5% depreciation on furniture. So the new value which is given in the balance sheet is value after deducting the depreciation for plant and machinery at 10% and furniture at 5% respectively. So when we are taking this new value, we have to take from the cost before minus we want the value where depreciation is not deducted. फिर हमें actual profit समझ में आएगा. मतलब ये 10,44,000 है value, but ये कौन से value से revise हुआ है? They are saying from the value where depreciation was not provided. So ये year में 8,50,000 इसमें 10% depreciation charge हुआ है. तो कितना वैल्यू होगा ये? अगर हमें ये वैल्यू डिप्रिसिएशन माइनस नहीं, विदाउट माइनस जो वैल्यू है, वी वांट दैट वैल्यू. सो 8,50,000 इसमें से 10% डिप्रिसिएशन माइनस हुआ है तो ये 90% वैल्यू रहेगा. तो ये 90% वैल्यू का हम 100% वैल्यू निकालेंगे बाय डूइंग अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. एंड देन 80,000 ऑल्सो इसमें भी 5% फर्नीचर में डिप्रिसिएशन हुआ है तो ये 95% वैल्यू रहेगा. हमें 100% वैल्यू चाहिए. So then only we will get the correct values and then we will find out ki how much, whether it is a revaluation profit or is it a revaluation loss. Then the stock of B Limited, then we will be able to calculate the proper revaluation profit or revaluation loss. The stock of B Limited included, the stock of B Limited included rupees 50,000 in respect of goods received from A Limited. The stock of B Limited included rupees 50,000 in respect of goods received from A Limited. Now B Limited ka stock is 1,50,000. This 1,50,000 includes stock amount of 50,000 which is in respect of goods received from A Limited. ये 1,50,000 stock में 50,000 worth का stock है which has been purchased from A Limited and which is invoiced at cost plus 25%. मतलब ये 1,50,000 में 50,000 का जो स्टॉक है उसमें 25% का प्रॉफिट चार्ज किया है. So that 50,000 is having a profit of 25% on cost. So ये value 50,000, ये तो A का selling price है. ये 50,000 क्या है? ये 50,000 जो है, ये जो 1,50,000 में 50,000 जो included है वो तो सेलिंग प्राइस में ए ने सेल किया है. ए क्या करता है, उसको जो भी कॉस्ट लगता है उस पे 25% का प्रॉफिट लगा के सेल करता है. सो इफ द कॉस्ट इज 100, if we assume the cost to be 100, the A Limited sells the products at 100 plus 25, that is 125% of the 125% value. So ये जो 50,000 है जो सेल किया है बी लिमिटेड को वो 125% में है. So we will calculate the profit. We will calculate the profit and then
that profit has not been realized. अब दोनों A limited and B limited are one group, तो इनके बीच में कोई भी profit element नहीं होना चाहिए. So ए लिमिटेड ने जब गुड्स सेल किया बी लिमिटेड को, तब ए लिमिटेड के सेल्स में चला गया, वो प्रॉफिट इंक्लूडेड है. देन वो सेल से ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट, मींस वो प्रॉफिट आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ है. सो हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो ये स्टॉक में से माइनस करेंगे, बिकॉज नाउ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर वन बिजनेस, उनके बीच में कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए. Therefore, that profit is known as unrealized profit. Agar B Limited would have sold this 50,000 ka goods to someone, then we would have not calculated this unrealized profit. But because those goods were not sold by B Limited, they are lying with B Limited in the stock. So this 50,000 we have to record at the cost profit by deducting the profit which was charged by A Limited. ए लिमिटेड ने जो प्रॉफिट चार्ज किया है, हम वो प्रॉफिट को माइनस करेंगे. सो 1,50,000 में 50,000 का जो स्टॉक जो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को सेल किया है, एंड ए लिमिटेड ने सेल करते वक्त कॉस्ट पे 25% का प्रॉफिट चार्ज किया है. दैट प्रॉफिट वी हैव टू फाइंड आउट एंड वी हैव टू माइनस फ्रॉम द स्टॉक, एंड ऑल्सो वी हैव टू माइनस फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज दैट प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द profit and loss account of A Limited, that also has to be deducted as unrealized profit. So this is the question. What we have to prepare? We have to prepare consolidated balance sheet. What we have to prepare? We have to prepare consolidated balance sheet. What we will do? We will prepare consolidated balance sheet. Let us prepare the consolidated balance sheet. But before preparing the consolidated balance sheet, what we will have to do, we will have to go to the first step. We will have to first step and we have to calculate the holding ratio. What is this holding ratio? Holding ratio is the ratio of shares held by A Limited and B Limited. Shares held by A Limited and shares held by B Limited, that we have to calculate and we will get the holding ratio. So holding ratio में क्या आएगा? Shares held by A Limited equal is to shares held by B Limited. Shares held by A Limited and shares held by B Limited, that we have to find out. So let us see how much shares. हम B Limited का जो shares है उसको हम divide कर रहे हैं. A Limited का जो shares है, that we have to A Limited का जो सॉरी नॉट ए लिमिटेड, बी लिमिटेड का शेयर्स को हमें डिवाइड करना है बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी. सो ए लिमिटेड एक्वायर्ड हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स इन बी लिमिटेड? 96,000 शेयर्स. सी फर्स्ट लाइन इटसेल्फ सेज कितना शेयर्स? 96,000 shares, and this acquisition took place on 1/1/2012. On 1st January 2012, 96,000 shares. So यहाँ पे we will write 96,000 shares, and इसमें कितना बचा रहेगा? Total number of shares 12 lakh. One share is of 10 rupees. So 12 lakh divided by 10, we get 1,20,000. So 1,20,000 में total number of shares in B Limited was 1,20,000, जिसमें से A Limited ने 96,000 का शेयर खरीद लिया.
So how much share is left out with B Limited? 24,000. So this becomes the ratio. 96,000 A ने खरीदा, B के पास बचा है 24,000. So इसमें 3 zeros were common. So what we have done, we have minus the 3 zeros here. रेशो निकालना है. हाउ मच शेयर इज हेल्ड बाय ए लिमिटेड. ए लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी. होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी which acquires maximum shares in the other company. So B Limited का maximum shares, that is 96,000 shares A Limited ने acquire किया. So shares held by A Limited is 96,000. Total number of shares in B Limited was 12 lakh divided by 10, because one share is of 10 rupees, होता है 1,20,000. So 1,20,000 में 96,000 शेयर्स ए लिमिटेड ने एक्वायर किया. सो यहाँ पे कितना बचा? 24,000. सो हम क्या करेंगे? रेशो हमने निकाला, इसको 12 के टेबल में ये दोनों नंबर आता है, हम इसको और छोटा कर सकते हैं. 12 8s are 96, 12 8s are 96 and 12 2s are 24. 8:2 रेशो. लेकिन अगर आप इसको और छोटा कर सकते हो, 2 के टेबल में 8 भी आता है, 2 भी आता है. 8 आता है 4s are and 2 आता है 1s are. So we get our holding ratio 4:1. If you do not want to cut short the ratio, आपको इसको 96,000 और 24,000 ही रखना है, तो वो भी रख सकते हो. जीरोस माइनस करके 96:24 रखना है तो वो भी कर सकते हो. 12 के टेबल में दोनों नंबर्स आता है. 12 8s are 96, 12 2s are 24. 8:2 भी रख सकते हैं. 8:2 और फर्दर छोटा होता है 2 के टेबल में. 2 4s are 8, 2 1s are 2. So 4:1 is the final ratio. इससे छोटा we will not be able to do. So हमारा पहला स्टेप हो गया. सेकेंड स्टेप हम जो कैलकुलेट करते हैं, that is जो सेकेंड स्टेप हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट. Next what we calculate is the capital profit. Capital profit is the profit before the acquisition of the maximum number of shares by holding company. So what capital profit are the profits of the subsidiary company before its acquisition. एक्विजिशन हुआ 1/1/2012, ईयर एंड है 31/12/2012. सो पिछले साल का जो भी प्रॉफिट होगा वो पूरा का पूरा कैपिटल प्रॉफिट होगा. तो पिछले साल का क्या क्या प्रॉफिट है यहाँ पे? शेयर प्रीमियम इज रिजर्व. रिजर्व मीन्स प्रॉफिट सेविंग ऑफ द बिजनेस. बट बी लिमिटेड में कोई शेयर प्रीमियम नहीं है. Capital reserve 80,000, general reserve 1 lakh, profit and loss account 1 lakh. So all together we have 3 profits, that is capital reserve, general reserve and profit and loss account. 80,000, 1 lakh, 1 lakh. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्विजिशन के पहले का प्रॉफिट. सो कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा. और ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है ये इस साल का प्रॉफिट है और इस साल ही एक्विजिशन हुआ है. सो एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट को हम रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं. सो 80,000, 1 lakh, 1 lakh 80,000 is capital reserve, general reserve, P&L account is 1 lakh each. So let us write down here. कैपिटल प्रॉफिट में हमारे पास क्या है? कैपिटल प्रॉफिट में हमारे पास कैपिटल रिजर्व है 80,000. जस्ट नाउ वी हैव सीन 80,000. Then we have general reserve and P&L account 1 lakh each. General reserve 1 lakh and
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 lakh. Capital reserve 80,000. General reserve and profit and loss account 1 lakh. So इतना प्रॉफिट्स है. इसके अलावा देर आर सम रीवैल्यूएशन ऑल्सो. सो रीवैल्यूएशन भी हुआ है. सो लेट अस कंसिडर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस. ये भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे एडजस्ट रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस. सो सबसे पहले लेट अस गो टू प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी का ओल्ड वैल्यू था 8,50,000 एंड न्यू वैल्यू है 10,44,444. 10,44,444 is the revised value of plant and machinery. Pay attention here. It is very like you will it is a little bit complicated, so pay attention here. 10,44,444 is the value, revised value of plant and machinery. ओल्ड वैल्यू था 8,50,000. प्लांट एंड मशीनरी का ओल्ड वैल्यू है 8,50,000 एंड न्यू वैल्यू है 10,44,444. तो माइनस करेंगे तो हम बोलेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट. एकदम सिंपल हो जाएगा. प्लांट एंड मशीनरी कितना है इधर 8,50,000 और न्यू वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी का कितना है 10,44,444. सो व्हाट हैज हैपेंड. हम ऐसे देखेंगे तो हम बोलेंगे कि देयर इज अ प्रॉफिट बिकॉज 8,50,000 में से प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 10,44,444 हो गया. वैल्यू इंक्रीज हुआ है. देन इट इज अ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट. बट सी पॉइंट के वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज वन अनदर पॉइंट, एडिशनल पॉइंट. अगर ये सी पॉइंट नहीं होता तो 100% हम ऐसा ही करते. 8,50,000 was the old value. New value is 10,44,444 minus किया revaluation profit आ गया. But because they have also included depreciation here. So depreciating figures for plant and machinery and furniture on 31/12/2012 ये 8,50,000 and 80,000 ये depreciate होने के बाद वाला वैल्यू है. Means these both are WDVs. So हमें क्या करना है, हमें जो कंपैरिजन करना है रिवैल्यूएशन का वो depreciation ऐड करके जो अमाउंट आएगा वो वैल्यू से करना है. ये 8,50,000 में depreciation माइनस हुआ है. सीधे से प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, plant and machinery and furniture where after providing depreciation for 2012 for the year 2012 हमने 10% depreciation charge किया plant and machinery को and 5% depreciation charge किया furniture को on the book value. on एसेट जो बुक वैल्यू था 1 जनवरी 2012 के दिन उस पे हमने 10% एंड 5% डिप्रिसिएशन चार्ज किया है. दैट मीन्स व्हाट, जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है, प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू है, प्लांट एंड मशीनरी plant and machinery is how much? Plant and machinery का न्यू वैल्यू है 10,44,444. ये क्या, ये जो रिवाइज वैल्यू है इसमें हम 8,50,000 माइनस नहीं कर सकते बिकॉज ये 8,50,000 ये WDV है. इस पे कितना परसेंट डिप्रिसिएशन माइनस हुआ है, इस पे 10% डिप्रिसिएशन माइनस हुआ है. तो जो 8,50,000 है ये कितना परसेंट वैल्यू है, ये 90% वैल्यू है.
सो 100% वैल्यू कितना रहेगा? हमें चाहिए डेप्रीसिएशन माइनस करके 90% हो गया, बिकॉज डेप्रीसिएशन इज 10%. सो डेप्रीसिएशन हम माइनस करते हैं तो ये 90% वैल्यू है, बट हमें चाहिए 100% वैल्यू. टू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8,50,000 into 100 divide by 90. 8,000, 8 lakhs, not 8,000, 8,50,000 into 100 into 100, 8,50,000 into 100 divide by 90. What we have to do in the working also I can show you again कि ये जो 8,50,000 का अमाउंट है इसमें डेप्रीसिएशन 10% माइनस किया है. so, ये जो वैल्यू है हमें पता नहीं डेप्रीसिएशन से पहले कितना अमाउंट था, बट ये 8,50,000 में 10% डेप्रीसिएशन माइनस हुआ है. सो ये 100 में से 10% डेप्रीसिएशन माइनस किया से 90% वैल्यू है. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 100% वैल्यू कितना रहेगा? So do it. How much you are getting? How much you are getting? 8,50,000 into 100 divide by 90. You get 9,44,444. How much we get? We get 9,44,444. मीन्स ये जो 100% वैल्यू है जिसका हमने अगर 10% depreciation निकाला तो the remaining amount what we get is this. So take your calci, 8,50,000 into 100 divide by 90. You get 9,44,444. How much we get? 8,50,000 into 100 divide by 90. You get 9,44,444. 444. So कितना revaluation हुआ? अभी माइनस करो. You get the revaluation amount, that is 1 lakh. You get the revaluation profit, that is अभी वैल्यू कितना हुआ? पहले था 9,44,444. अभी हुआ 10,44,444. means there is a profit of 1 lakh. Same way we will work out for furniture also. फर्नीचर के लिए भी वर्कआउट करते. फर्नीचर का नया वैल्यू क्या दिया है? फर्नीचर का नया वैल्यू है 83,211. फर्नीचर 83,211 माइनस 83,211 माइनस व्हाट इज द ओल्ड वैल्यू? ये है 80,000. ओल्ड वैल्यू था 80,000, बट 80,000 में 5% का डेप्रिसिएशन माइनस करके आया है. ये 80,000 हमें आया है 5% का डेप्रिसिएशन माइनस करके. दिस 80,000 व्हाट वी हैव गॉट इज आफ्टर डिडक्टिंग 5% depreciation. So what we will do here, 80,000 ये कितना है? ये 95% है. हमें 100% चाहिए. सेम लाइक द अबाउ वन. इफ यू वांट मी टू शो हियर आई कैन शो 80,000. ये 95% है. 5% का डेप्रीसिएशन गया है. तो 100% वैल्यू कितना रहेगा? जस्ट अ क्वेश्चन मार्क. Cross multiply 80,000 into 100 divide by 95. So how much we get?
How much we get the revised value? How much we get the revised value? Let us see. 80,000 into 100 divide by 95. We get 84,211. मतलब हमारा ओल्ड वैल्यू ज्यादा था न्यू वैल्यू से. हमारा ओल्ड वैल्यू था 84,211 and new value is 83,211. That means our old value was greater than the new value. Old value 84,211 tha. New value is 83,211. Means there is a loss, revaluation loss of 1,000. Revaluation loss है 1,000 का. There is a loss, revaluation loss of 1,000. हमारा वर्किंग है there is a revaluation loss of 1,000. And then what else is given? Trade investment और गुडविल का कोई वैल्यू नहीं था. प्लेसिंग नो वैल्यू फॉर ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड गुडविल. ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज 30,000. पूरा वैल्यू कम हो गया. एंड गुडविल 1,50,000 है, उसका भी पूरा वैल्यू कम हो गया. सो हम लोग क्या करेंगे? लॉस हो गया, वैल्यू कम होना, असेट का वैल्यू कम होना, लॉस हो गया. सो one is trade investment, which was 30,000, becomes 0. So we will show in the bracket 30,000 value has become 0. And goodwill, this was 1,50,000, which again has become 0, no value. So now we get our capital profit. इसके बाद जो मिलेगा will be our capital profit. We get our capital profit 80,000 plus 1 lakh plus 1 lakh plus 1 lakh minus 1,000 minus 30,000 minus 1,50,000. How much do we get? ये दोनों लॉस हो गया. सो हम ऐसे ब्रैकेट में वी कैन राइट 0 हो गया वैल्यू, लॉस. Here also bracket में we can write loss, and furniture also bracket में we can write loss. Just adjust here. This also let us keep here. Everything comes in one line. So how much you are getting? Capital profit. You are getting the capital profit as 1,99,000. हमारा capital profit हो गया 1,99,000. ये दो कंपनी में जाएगा. It is A Limited and B Limited. दोनों में शेयर होगा. But as per the holding ratio, which is 4:1, holding ratio कितना है? 4:1, 4/5 and 1/5. So what we will do? 1,99,000 into 4 divided by 5, and again 1,99,000 into 1 divided by 5. How much we are getting the amount? 1,99,000 into 4 divided by 5
we get 1,59,200 and 4 divided by 5 is this much, and 1,99,000 into 1 divided by 5, we get 39,800. So we got our capital profit. Now let us go to the third one, that is the revenue profit of B Limited, profit during the year, revenue profit of B Limited. So let us see, revenue profit means profit for the year. B Limited ka profit for the year is how much? B Limited ka profit for the year is 60,000. Profit for the year is 60,000. So let us write here profit for the year. Profit the year $60,000. Profit for the year 60,000. अब ये प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिकॉज देयर इज अ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, से प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू में देयर इज अ इंक्रीज, प्लांट एंड मशीनरी के वैल्यू में कितना इंक्रीज हो गया है, 9,44,444 से वैल्यू हैज बिकम 10,44,444. 1 लाख का वैल्यू इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज वैल्यू में वी हैव टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन. सो लेस जो हमने कम डिप्रिसिएशन चार्ज किया था वो यहाँ पे करेंगे. लास्ट ईयर हमने डिप्रिसिएशन कम चार्ज किया था ऑन प्लांट एंड मशीनरी which is 1 lakh का 10%, which is coming to how much, 10,000. Same way, one more thing, that is add फर्नीचर पे हमने क्या किया है, फर्नीचर पे हमने 84,211 पे 5% डिप्रिसिएशन चार्ज किया था. फर्नीचर डिप्रिसिएशन परसेंटेज 5 एंड हमने डिप्रिसिएशन किस पे निकाला था, 84,211 में डिप्रिसिएशन निकाला था 5%, बट नया वैल्यू इज 83,211. वी हैव कैलकुलेटेड एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन. क्यों, हमने डिप्रिसिएशन निकाला था 84,211 पे, बट द नाउ वैल्यू रिवाइज्ड वैल्यू इस 83,211 मींस 1000 पे भी हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया था. अब वो डिप्रिसिएशन विल बी सेविंग, वो डिप्रिसिएशन बच जाएगा. दैट डिप्रिसिएशन विल बी सेव्ड. वी हैव चार्ज्ड extra depreciation on 1,000. So that depreciation amount will be saved now. That depreciation amount will be saved now. So यहाँ बोलेंगे over depreciation जो हमने चार्ज किया था फर्नीचर पे, over depreciation on furniture it is 1,000 पे 5%, which is equal to how much, 5%, which is equal to 50. So this is the saving. So how much revenue profit we get, revenue profit will be 50,000, 50,050
सो ये 50,000 50 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे between A limited and B limited. A limited and B limited 50, as per the holding ratio, 50,000 50 into 4 divided by 5, 50,000 50 into 1 divided by 5. How much it will come? 40,000 40 and 10,000 10. I hope all of you are getting this answer. So we have got the revenue profit of A limited as well as B limited. Now we will go to our next step where we will be calculating the cost of control. Cost of control में आएगा पहले तो cost of investment, cost of investment is how much? Let us go to the question. Cost of investment is 10,80,000. Cost of investment is 10,80,009. A Limited acquired on 1/1/2012 from the shareholders of B Limited 96,000 shares allotted to them at 10,80,000. 10,80,000 में shares allot किया था. So what we will do here? Cost of investment is how much? Cost of investment is 10,80,000. इसमें से लेस करते हैं शेयर कितना पेड अप शेयर कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड को कितना शेयर्स मिला ए लिमिटेड को कितना शेयर्स मिला 96,000 शेयर्स मिला 10 रुपीस का. This becomes 9,60,000. Correct? 96,000 shares A limit 10,80,000 दे के 96,000 into 10 9,60,000 का शेयर्स मिला. और कैपिटल प्रॉफिट में कितना मिला? कैपिटल प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट विच इज बिफोर एक्विजिशन. मीन्स एक्विजिशन होने से पहले का जो प्रॉफिट था बी लिमिटेड का उसमें भी शेयर मिला 1,59,200. So here what we will do, less capital profit of A limited. So यहाँ पे we will write less capital profit A limited. How much it is? 1,59,000. So less करना है. So show in bracket less करना है ना ये. So this also we have to less 159,200. So क्या amount आता है? Do you get a negative answer here? You get a negative answer of 39,200. You get a negative answer of 39,200, which we call. देखो जहाँ पे हमने सिर्फ 10,80,000 वर्थ का हमने 10,80,000 देकर शेयर्स खरीदा, वहां पे हमें 9,60,000 का शेयर्स भी मिला, 1,59,200 प्रॉफिट में भी शेयर मिला. सो हमें एक्चुअली वी हैव गॉट अ प्रॉफिट 39,200 हमने कम पे किया.
सो ये प्रॉफिट को हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व. ये प्रॉफिट को वी विल कॉल इट एज कैपिटल रिजर्व. सो इसके बाद नेक्स्ट वन व्हाट कम्स इज माइनॉरिटी interest. It will do minority interest. Minority interest calculate करते हैं. Minority interest means the interest of B Limited which is left out now. Interest of the minority in the company. The less number of shares are now left with B Limited. So B Limited का क्या शेयर है? अभी जो बच गया बी लिमिटेड को क्या मिला है, क्या बचा हुआ है, वो उसको मिला है. दैट वी विल फाइंड आउट. सो विल फाइंड आउट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट. लेट अस फाइंड आउट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट नाउ. सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या आ जाएगा? लेट अस फाइंड आउट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट. सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में सबसे पहले पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड. कितना शेयर बचा? 1,20,000 में 96,000 शेयर्स went to A Limited. So 2,40,000 and add share in capital profit. Add share in revenue profit. Share in revenue profit. So let us see कितना capital profit and revenue profit है. Capital profit is 39,800. So let us write here 39,800. 39,800 and B Limited का 10,000. जो revenue profit है it is 10,000. 10 rupees. सबको ऐड करेंगे. We get the minority interest. So how much is the minority interest? It is coming to 2,89,810. So this is the minority interest. 2,89,810. This is the minority interest. The sixth one final we will be calculating here. Just let me remove this. Consolidated profit and loss account. Profit and loss account of A Limited. Consolidated profit and loss account of A Limited. So here what we will write, सबसे पहले opening balance of P&L account. लेकिन किसका? A Limited. So let us go to the question. Profit and loss account of A Limited. It was 6 lakh and profit during the year भी है 1,80,000. So how much is the opening balance of P&L account? 6 lakh and profit during the year 1,80,000. So here we will write 6 lakh and 1,80,000. 6 lakh plus 1,80,000
80,000, 6 lakh and 1,80,000, which is equal to 7,80,000. Add revenue profit जो मिला है वो revenue profit is the profit after acquisition which is earned by A Limited. A Limited का जो share है revenue profit में that will come A Limited का जो revenue profit of A Limited यहाँ पे डालेंगे. How much is the revenue profit of A Limited? 40,000, 40. So this we will add here. 40,000, 40. इसके बाद लेस करना पड़ेगा which is known as unrealized profit. मैंने बोला था that stock includes. Let us go to that point. Stock of B Limited included 50,000 in respect of goods received from A Limited. Stock of B Limited included rupees 50,000 in respect of goods received from A Limited. So 50,000 का जो stock है B में stock is 1,50,000. उसमें जो 50,000 है 1,50,000 includes 50,000 which is purchased from A Limited, and A Limited has charged a profit of cost plus 25%. So let us find out the unrealized profit. Let us in the working find out the unrealized profit. Unrealized profit. So क्या होता है normally? It is cost plus profit is equal to selling price. And stock का वैल्यू क्या है यहाँ पे? सेलिंग प्राइस क्या है स्टॉक का जो ए लिमिटेड ने चार्ज किया? इट इज 50,000. दिस 50,000 इज द सेलिंग प्राइस. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 25%. सो हम कॉस्ट को 100 मान लेते. हम कॉस्ट को 100 मान लेते बिकॉज प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट के साथ कंपेयर किया गया है. प्रॉफिट हैज बीन कंपेयर्ड विद कॉस्ट प्लस 25%, जिससे कंपेयर किया परसेंट को cost plus 25%. So assume if cost is 100 and profit is 25%. So हम कितने में सेल करेंगे? cost 100 plus 25, that is 125 में सेल करेंगे. So ये जो 125 मिला, ये अगर हमें पता है, हमें सेलिंग प्राइस पता है कितने में सेल किया है ए लिमिटेड ने. A Limited has sold for 50,000. Then question mark, how much will be the profit it has made? 50,000 into 25 divide by 125. Do the profit. Calculate this. 50,000 into 25 divide by 125. We are getting 10,000 as unrealized profit. So ये unrealized profit working note में है. That's how much? 10,000. Unrealized profit is 10,000. So how much will be the balance? How much will be the consolidated profit and loss account which will come in the balance sheet? Consolidated profit and consolidated profit and loss account minus karo. How much you are getting? 7,80,000 plus 40,000. 7,80,000 plus 40,000 40 minus 10,000. You get 8,10,000 and 40. This is the final one. Now let us go to the balance sheet. What is asked in the question? Consolidated balance sheet
of A Limited and its subsidiary B Limited. So first हम इसको कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे equity liability side को will call it as equity and liabilities. So equity and liabilities में पहले आता है shareholders fund. Shareholders fund में comes share capital and share capital and the other one is reserves and surplus. Share capital and reserves and surplus. Share capital and reserves and surplus. Share capital and reserves and surplus. So इसको हम बोलेंगे 1 note number 2. So let us go here. Note number 1, share capital. Now शेयर कैपिटल जो बी लिमिटेड का, ध्यान में रखना सब्सिडरी कंपनी का हमेशा इन एवरी सब्सिडरी कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है वो भी हम डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालते वक्त एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, एंड शेयर्स भी हम रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रॉफिट में डिवाइड कर देते हैं. सो व्हाट इज we have to take the reserves and share capital only of the holding company. होल्डिंग कंपनी का ही शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स लेना है. सो इक्विटी शेयर कैपिटल इज हाउ मच? 24 lakhs. इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 शेयर इज ऑफ 10 rupees. सो कितना हो जाएगा शेयर कैपिटल? 1 share is of 10 rupees. So 24 lakh divide by 10. We get 2,40,000 equity shares of rupees 10 each, which is equal to 2 lakh, which is equal to 24 lakhs. So here we will write our first amount, that is 24 lakhs. Or let us go to the next one, that is reserves and surplus. Reserves and surplus also of B Limited हमने डिवाइड कर दिया कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट में. अभी हमें किसका रिजर्व लेना है? अभी हमें रिजर्व्स लेना है ओनली ऑफ द होल्डिंग कंपनी. नाउ वी विल टेक द रिजर्व्स ओनली ऑफ द होल्डिंग कंपनी. वी हैव शेयर प्रीमियम which is also called securities premium, general reserve, profit and loss account. Share premium, general reserve, profit and loss account, and we also have capital reserve. कैसे पता चला? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हमें यहाँ पे कैपिटल रिजर्व मिला है. कैपिटल रिजर्व मिला है 39,200. So let us start here. Here let us start. What is it? Securities premium. Capital reserve is there in the cost of control. Then we have general reserve and profit and loss. तो हमने consolidated profit and loss account हमने already working हमने निकाला है. Profit and loss account ये तो हमने already find out किया है. So how much is the amount? Let us find out the amounts. 3,60,000, 1,50,000,
Here 3,60,000. 3,60,000. Capital reserve is 39,200. We have already seen cost of control में दिया 39,200. General reserve अभी देखा 1,50,000. And profit and loss account कितना है 8,10,040. Profit and loss account is, it is there in the working note, 8,10,040. ये सबको ऐड करो 3,60,000 plus 39,200 plus 1,50,000 plus 8,10,040. We are getting 13,59,240. 13,59,000. 13,59,240. So इसके बाद next, this is done. Now next what we will write is minority interest. This also we have find out. Minority interest is how much? Minority 2,89,810. 2,89,810. Then next one is current liabilities. Current liabilities is there. So current liabilities may, let us see what current liability is there in the question. We have creditors and current account of B Limited, which is 34,000. This is current account में negative balance. Current account में negative balance. Actually, this should be 1 minute. A Limited. Current account of A Limited, which is 34,000. Here it is in the B Limited. It is positive current. Current account means bank balance. Current account means what? Bank balance, right? But यहाँ पे there is a, you may say in the asset side में ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है. तो जो डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव ज्यादा है तो असेट साइड में लिख लेंगे. तो क्रेडिटर्स हाउ मच इट इज, सी दिस current account is 34,000 in the liability side and in the asset side it is 39,000. means asset का वैल्यू ज्यादा है तो asset में लिखेंगे डिफरेंस. क्रेडिटर्स कितना है 296 एंड 219. इसको बोलेंगे ट्रेड पेएबल. So let us go to the balance sheet and let us write trade payables. How much it is? 2,96,000 plus 2,19,000. So how much it is coming? Add both of them, we get 5,15,000. इसके साथ this is done. Now we will go to assets. Assets में we write asset में non current asset and current assets. तो non current asset में हम लिखेंगे fixed assets
फिक्स एसेट में tangible and intangible. Intangible. So tangible में what we have, go to the asset side. Tangible में what we have, tangible में हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर है, दोनों का नया वैल्यू दिया है. प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, इसका कितना है प्लांट एंड मशीनरी 9,60,000 और इसका रिवाइज्ड वैल्यू इज देयर. आई विल शो यू, वी विल डू अकॉर्डिंगली. एंड यहाँ पे 2,60,000 एंड इसका भी दैट अदर वैल्यू इज गिवन. हाउ टू राइट आई विल शो हियर. See, let us go to tangible asset के लिए. Let us go to the note because more than one is there. Third one, third note. Tangible assets में पहले है प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी में 9,60,000 इज द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ए लिमिटेड. यहाँ पे कोई रिवैल्यूएशन नहीं है. 9,60,000 एंड फर्नीचर 2,60,000. यहाँ पे देखो कितना है 8,50,000. कितना है, हाउ मच इट इज, प्लस 8,50,000 डेप्रिसिएशन सब ध्यान में रख के. 8,50,000 में रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है 1 लाख एंड इसमें डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया 10,000. So this will be the value which is coming to 19 lakhs. सेम वे फर्नीचर का है ए लिमिटेड का 2,60,000, बी लिमिटेड का है 80,000, जिसपे माइनस क्या हुआ है 1,000 वैल्यू कम हुआ और डेप्रिसिएशन में 50 रुपीज सेव हुआ. दिस विल बी द वैल्यू 3,39,050. दोनों को ऐड किया, we got 22,39,050. We will write here 22,39,050. Intangible में what is that? Intangible में goodwill is there in one company, दूसरा कंपनी का 0 हो गया. सो गुडविल 5 लाख है, ये तो 0 हो गया, राइट, ये तो 0 हो गया. सो गुडविल ऑफ ए लिमिटेड 5 लाख, बी का तो 0 हो गया, नो वैल्यू ऑफ गुडविल बोला है. सो हियर गुडविल में इसका गुडविल है ओनली ऑफ ए लिमिटेड बिकॉज बी लिमिटेड का गुडविल हैज बिकम 0. सो कितना है वो 5 lakhs. Then investment, is there any investment? See, investment में trade investment था इधर, that became 0 along with goodwill. This also became 0, तो ये नहीं आएगा. Investment in B limited 10,80,000, ये हमने already cost of control में ले लिया, so there will not be any investment. So directly we can go to current asset. If we want, we can write here. We can write here non-current investments. नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, nil का 0 हो गया. Next, now we can go to B, that is current
assets. You can go to current asset. Current asset में है inventories. इसमें there is a adjustment. Unrealized profit is there. Trade receivables, and finally cash and cash equivalent. सबसे पहले let us go for the fourth one, for the inventory. Let us go for the inventory. So here fourth one, inventories. So inventories, how much is given? Inventories given is 2 lakh and 1,50,000, but 10,000 का unrealized profit है. Unrealized profit is there. See here, unrealized profit of 10,000. So let us come here and write inventories में what is this? Inventory means stock, and stock में what is the value? 2 lakh. Stock is how much? 1 minute, here only we can write how much it is. 2 lakh and 1,50,000. 2 lakh plus 1,50,000. इसमें से लेस करेंगे unrealized profit of 10,000. So this becomes 3,50,000. Unrealized profit is 10,000. So this becomes 3,40,000. So stock inventories, we will write how much is the inventories. It is 3,40,000. Trade receivable कितना है? Go to the question. Trade receivable is 8,20,000 plus 4,10,000. 8,20,000 plus 4,10,000. So 12,30,000. We have to write RN. We will write trade receivable is 12 lakh, 8,20,000 plus 4,10,000. 4,10,000. So 8,20,000 plus 4,10,000 will give us 12,30,000. Finally, cash and cash equivalent. We again have to go to a note because there are two cash and cash equivalent. हमारे पास बैंक बैलेंस भी है 2,50,000. फिर करंट अकाउंट है बी का, ए का 34,039. One is in the asset, other one is in the liability. So let us go to the last one, that is cash and cash equivalent. Let us go to the last one, cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent में bank balance is there 2,50,000. So I will write here bank balance. Bank balance is how much? 50,000 plus 2 lakh. So I will write here. पहला वाला था 2 lakh. A limited का बैंक बैलेंस is 2 lakh. Other B limited का it is 50,000. So we get 2,50,000. We get 2,50,000. And then what is the next one? Next one is current account. Next one is current account. So यहाँ पे ए का है, बी का है 39,000 in the asset side and ए का है 34,000 in the liability side. Liability में मतलब negative balance, asset में मतलब positive balance. Asset में current account है, means it's a positive balance. Liability में 34,000 is a negative balance. I'll show once again here. See current account, in the here it is 39, here it is 34.
So 39 minus 34, what difference? Our asset side is more. So positive balance asset में ही लिखेंगे. कितना है? 39 minus 34, it is 5,000 and this becomes 2,55,000. So we will write here finally 2,55,000. So finally this will be the total of your asset side. See whether it is tallying, how much amount it is coming. It is coming 45,64,050. It is coming 45,64,050. When we add all of this, we get 45,64,050. And here also, we get the same amount, 45,64,050. With this, we can say that our balance sheet is getting tallied. You can see our balance sheet is getting tallied with this, and with this the sum is done. Thank you very much everyone.